हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कोडिंग विद स्वप्निल। दोस्तों, क्या सच में लर्निंग पाइथन इज इजी एज कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इफ लर्निंग पाइथन इज इजी एज कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन व्हाई? क्या सच में पाइथन सिंटैक्स इतना आसान है कि उसे हर कोई समझ सकता है? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि पाइथन सिंटैक्स कैसे काम करता है। If you are a beginner in Python, this is the must watch video for you। दोस्तों, हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि एक हेलो वर्ल्ड को आउटपुट विंडो में प्रिंट करने के लिए हमें पाइथन में सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना पड़ता है एंड सी प्लस प्लस में हमें io.string डिफाइन करना पड़ता है, मेन फंक्शन लिखना पड़ता है। तो आप कंपैरिजन देख सकते हो कि एक ही हेलो वर्ल्ड आउटपुट प्रिंट करने में हमें सी प्लस प्लस में 4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, वही पाइथन में हम सिर्फ एक लाइन में लिख के अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो आज हम हमारी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर एक पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, एक पाइथन प्रोग्राम को लिखने में पाइथन सिंटैक्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन सिंटैक्स। आपको पाइथन सिंटैक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, आप बिगिनर हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैं आपको कुछ लास्ट में बोनस टेक्निक्स भी देने वाला हूं सिंटैक्स के बारे में। दोस्तों, पाइथन सिंटैक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट वाला होगा हमारा इंडेंटेशन, देन वेरिएबल, देन लास्ट वन विल बी कमेंट। इन तीनों को हम इन डेप्थ समझने वाले हैं बाय यूजिंग सम पाइथन प्रोग्राम। फर्स्ट वन इज इंडेंटेशन। दोस्तों, यही एक एरर ऐसा है जो आपको बिगिनिंग लेवल पे बहुत परेशान करता है। सो टू राइट अ प्रोग्राम वी विल ओपन आवर आईडी, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमने स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड आइडियली ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। I will provide the link into the description box. Go and check out that. So we'll open ideally. तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि if 5 is greater than 2, and I am printing 5 is greater than 2 in print statement. Guys, if you observe, प्रिंट के आगे एक पर्टिकुलर स्पेस है, उसी स्पेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस एंटर। वी कैन सी 5 is greater than 2। अब अगर हमने इंडेंटेशन रूल को फॉलो नहीं किया तो हमें पाइथन क्या एरर थ्रो करता है वो भी हम देखते हैं। इफ 5 is greater than 2 and here we will not follow any indentation rule, so we'll print 5 is greater than 2 here as well. Now you can see expected an indent block after if statement on line number 1. So guys, अगर आपने इंडेंटेशन फॉलो नहीं किया है तो you will see this kind of error on your output window. So to remove this error, you have to follow the indentation rule. So basically आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप कोई if कंडीशन या पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड लिखे, तो जैसे ही आप एंटर करो, जहां पे आपका कर्सर होता है वहीं से आप कोड लिखना शुरू करो आपके नेक्स्ट लाइन में। जैसे कि 5 is greater than 2, will type enter here after colon. So after enter you can see my cursor, and now we need to start a writing code from here.
like this. Now you can see the output. Guys, we will see another example for indentation, but now we will do that in the online Python compiler, because of those who haven't the laptop, they can practice as well with us. दोस्तों, हम इंडेंटेशन एरर को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि इंडेंटेशन एरर कैसे रिमूव करना है, क्या टेक्निक्स है. So I will take another example, like if 10 is greater than 5, then I am printing 10 is greater than 5. So here we follow the indentation rule. We'll click on run. We can see the output on the output window, 10 is greater than 5. So now I will not follow the rule. So basically what I will do is I will remove the space जो कि हमारा p के आगे है. So as you can see now my syntax is like if 10 is greater than 5, then I'm writing print just below the if block. So जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमें एक इंडेंटेशन एरर आता है after executing the program. So again we will run this. Again you can see the indentation error, expected an indented block after if statement on line number 1. So now the question is how to remove this error. So first technique is आपका कर्सर आपको p के आगे ले जाना है, आपको क्लिक करना है टैब बटन जो आपका लैपटॉप का है. यू जस्ट नीड टू प्रेस वंस. आप टैब को प्रेस करोगे, दिस विल allocate a standard indentation in the if block and then run the program. Let's see what will happen. So we'll click on run, and yeah, we can see the output on the output window. Then second technique to overcome the indentation error is, while writing a code, you just need to take care of one thing, that is if you are writing any particular block of code, like in our case if 10 is greater than 5, let's say. So after pressing colon, you just need to click on enter. So now you can see there is a specific space before the cursor. So that showing some indentation. So that's mean from here you need to start your second line of code. अगर आपने एक बार भी बैकस्पेस प्रेस किया तो आपका स्टैंडर्ड इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. सो बेसिकली दैट मीन्स जो हमने एरर अभी देखा है इंडेंटेशन एरर, वो फिर से आपको आएगा. दोस्तों, सेकंड important part in Python syntax is variable. So why it is important? Because whenever you will write a code to declare some variables, and you need to follow the rule here as well. While declaring variable name, you have to follow some rules. There is a several rules. Like the first one is a variable name must be start with a letter or underscore character. And rule is a variable name cannot start with a number. Third is a variable can only contain alphanumeric characters and underscore, जैसे कि A to Z, 0 to 9 and underscore or something. And last one is you can use a case sensitive things while declaring the variable. Like these three A's you can see on the screen, these three A's are very different from each other. To understand this practically, let's jump into our IDLE. दोस्तों, अगर अभी तक आपने पाइथन एंड IDLE आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं की है, तो हमने पाइथन
एंड आइडियली कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उसके लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फर्स्ट install the python and ideally on your operating system, then come back to this video. We will practice and understand the python syntax together. Practically कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारे आइडियली में. I will first open ideally. दोस्तों we'll do one thing. Instead of opening ideally, we will open one online compiler so that those guys who their laptop, they can practice on the mobile. So as of now we will use any online python compiler. You can use ideally as well. These both are the same thing. हम वहां पर भी python कोड ही लिख के एग्जीक्यूट करेंगे. इफ यू वांट टू यूज ideally then obviously you can use and you can write the same code which is I am writing on the online compiler. दोस्तों तो हम आ चुके हैं हमारे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर पे. पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. वहां से क्लिक करके आप सीधा यहाँ पे रिडायरेक्ट कर लो. यहाँ पे हम अभी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं एज पर द रूल. इक्वल्स टू इन स्ट्रिंग, लेट्स से कोडिंग विद स्वप्निल. How you can declare a variable in which you can see we follow the rule. Let's declare some 5 to 6 वेरिएबल. 5-6 टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रूल्स को अच्छे से समझने के लिए. से my underscore var, same thing. I will copy this thing so we don't need to write again and again. This will save some time here. Then let's say underscore my bad, sorry for the spelling mistake guys. These are the 3 types. Let's write 3 or 4 more. Say my, will use camel case here, like first capital letter except first word. We'll see कि camel case क्या होता है, snake case क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे दोस्तों, टेंशन मत लो. दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हम ये 6 टाइप लेते हैं आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एज पर द रूल. क्या ये एज पर द रूल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें प्रोग्राम को रन भी करना पड़ेगा. तो विल सी द आउटपुट बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट. गाइस वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट आई विल मेक श्योर कि आपको सारी चीजें इन डिटेल समझे. ये बेसिक है गाइस. अगर ये बेसिक ही आपको नहीं समझा तो वो वाली जो हमारी सो कॉल्ड डेफिनेशन है कि पाइथन इज इजी एज कंपेयर टू द अदर लैंग्वेज, वो फिर हमारे लिए थोड़ी हार्ड बन जाएगी. एंड विल क्लिक ऑन रन. लेट्स सी if it's throw any kind of error or not. Okay, it's right. So that's mean we follow the rule. We follow the variable rules while declaring the variable. Now we will declare a variable and in which we will not follow the rule, so that you will understand कि अगर हमने वेरिएबल के रूल्स फॉलो नहीं करे एंड वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए तो व्हाट काइंड ऑफ एरर पाइथन विल थ्रो. You have to familiar about this error because अगर आपको एरर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एरर क्यों आया है. जैसे कि हमने इंडेंटेशन में देखा. अभी आप क्लियर हो, अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी इंडेंटेशन एरर आता है तो आपको आपके माइंड में होगा कि ये कुछ स्पेस की वजह से आ रहा है. पाइथन अपने आउटपुट में
अपने आउटपुट विंडो में लाइन नंबर भी देता है, तो उसी लाइन नंबर पे आपको जंप करना है, जो कि टेक्निक हमें इंडेंटेशन में फॉलो की हमने। सो दैट्स द मोटो कि मैं एज पर द रूल भी वेरिएबल ले रहा हूँ एंड नॉट एज पर द रूल भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, एंड विल डिक्लेयर सम वेरिएबल not using the rule. So let's say number at the start, myvar equals to coding with Swapnil. Now to see a output of this program, we'll use a print statement again here. Now let's run the program to see the output. Okay guys, you can see this is showing some error on the output window, that is syntax error, invalid decimal literal. आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि अगर आपको इंडेंटेशन एरर आता है या सिंटैक्स एरर आता है व्हाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, तो कैसे सॉल्व करना है। सो बेसिकली इंडेंटेशन के बारे में तो मैंने टेक्निक बता दी, बट इन केस ऑफ वेरिएबल आपको वेरिएबल का नेम चेंज करना पड़ेगा। लाइक इन आवर केस आई विल रिमूव 2 फ्रॉम द बिगिनिंग, हियर आई विल टेक अंडरस्कोर, हियर इंस्टेड ऑफ स्पेस we'll use capital V. So like this you can adjust the variable name as per the rule, and then when you run the program, see the output like coding with Swapnil, coding with Swapnil, coding with Swapnil. This is what 3 variables value we define. I hope you are clear about declaring the variable as per the rule. दोस्तों अब कुछ टेक्निक्स तो बनती है कि हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे अलग अलग केसेस में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैमल केस होता है, स्नेक केस होता है, तो दीज आर द टेक्निक्स फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। आपने अपने भाई को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये टेक्निक्स तो बनती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। अगर आपको भी एक पाइथन डेवलपर बनना है, अगर आप भी पाइथन के स्किल्स शार्प करने हैं और साथ ही साथ पाइथन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस सीखना है, गाइस सबसे पहले केस है हमारा कैमल केस। तो कैमल केस का भी यूज कर सकते हैं while declaring the variable. So basically camel case क्या होता है, your each word except first start with the capital letter. For example, let's say I will remove this code first, and let's say my variable name equals to coding with software. Guys, if you notice here, my first word is my, and then second word is variable, and third is name. So as this is a camel case, you can see except first letter, in my second and third variable I have taken V and N as a capital. So this is what we call as a camel case. Second technique is Pascal case. That means each word start a capital letter. So for example, we'll rename this. So in Pascal case, your M will be capital. So Pascal case means what? Your every first letter of your word will be capital. Then third technique is snake case. So basically snake case means we are using underscore as a separator. For example, like this. So these are the techniques that you can use while declaring the variable in your Python program. मजा आ रहा है ना गाइस, नाम ही सुन के, पास्कल केस, स्नेक केस। चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ और प्रोग्राम लेके, जैसे कि Python allows you to assign values to the multiple variable in one line.
इसे हम जरा इन डेप्थ प्रैक्टिकली समझते हैं. And we'll define a variable like x comma y comma z, and we'll assign a value orange comma red comma black. So as you can see, I have declared three variables and I assign three values only in one line. Instead of writing this variable name on the three lines, we can write in one line. If you want to see that which value is going to print if I use print x, print y and print z, let's run this. As you can see, the output orange, red and black on the output window, guys. So basically, whenever you are taking the multiple variables in the one line, how it behaves is the first variable will always take a value from the first position, second variable will take a value from the second position, and third variable will be take the value from third, and so on. It's depend on how many values you have. और हाँ दोस्तों, एक और चीज, जब आपको कोई स्टैटिक आउटपुट चाहिए तो आप प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग में डालेंगे जो भी आपको स्टैटिक आउटपुट चाहिए. अगर आपको वेरिएबल प्रिंट करना है तो अभी हमने जैसे स्क्रीन पे वेरिएबल प्रिंट किया है वैसे ही आपको वेरिएबल प्रिंट करने हैं बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट. स्टैटिक, व्हाट इज डायनामिक in Python, we will see going forward. So as of now, just keep in the mind, if you want to print your variable, just take the variable name as it is into your print statement. And if you want to print some static, then just take a string and whatever you will type between the string or into the string, you will get that as output. दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हो कि बार बार वेरिएबल प्रिंट करने से अच्छा एक ही लाइन में हम प्रिंट कर दे सारे के सारे वेरिएबल्स, तो क्या इसे हम पाइथन में कर सकते हैं? बिल्कुल गाइस, कर सकते हैं. जैसे कि अभी के एग्जांपल में हम प्रिंट स्टेटमेंट को तीन लाइन में लिख रहे हैं, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जेड. तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑन द थ्री लाइन, हम एक ही लाइन में प्रिंट करेंगे by using comma as a separator in our print statement. For example, print x comma y comma z. As you can see, I am printing three variables only in one print statement by using comma as a separator. Let's run the program. Will it work or not? Let's see practically. Okay, guys, you can see the output orange, red, black on the output window. Guys, in Python, you can also concatenate the string by using plus operator. Like in print statement, I will just do print x plus y plus z. So now this is concatenating the string. How it will concatenate? So as you can see the output in the output window. To see the output properly, after concatenating the multiple string, you need to give some space. For example, let's say orange space red and then space black. So now if I will run this program, now this is better guys, orange, red and black. Now you can see there is some space in between the word. And also by using plus operator, you can do the multiple arithmetic operations in the Python. For example, let's say x equals to 10, y equals to 20. And in print statement, I need a summation. Like in output, I want the summation of both the variables. So I will just type x plus y in the print statement. Now you can see the output as a 30 on the output window. While concatenating or performing any arithmetic operations by using plus sign, you need to remember one thing. You can only concatenate string plus string
or you can only perform arithmetic operations on the int plus int, float plus float, this kind of data types. Now, if you are thinking about what is int, what is float, what is string, these are the data types in Python. So going forward, we will learn this in detail as well. So as of now, just keep in mind integer means number, float means the number having the decimal, and string means whatever we are writing in the quotes. So if you try to concatenate the string and integer, so what will happen? So let's say x equals to 10 and y equals to, will assign one string. In string will take as a 20 and will run the program. So now you can see this is a type error. Type errors, unsupported operand type as for plus integer and string. So basically that means you are doing concatenations or on the two different data types. First one is your integer, that is x, and y is your string. So Python won't allow you to concatenate any arithmetic operations on the string plus integer. You need to remember this while writing or while performing the operations like concatenation or arithmetic operation. I hope you clear about concatenation and arithmetic operations, and you will keep this in mind forever. So this is what about our variables, rules of variables, concatenation and arithmetic operations. Now last part comes as a comment under the Python syntax. So Python has commenting capability for the purpose of in-code documentation. To comment your code, we can simply use hash at the beginning of your code. So for example, so if I run this program, you can see it's showing only hello world. So we comment, this is my comment wala part on the, which is on the line number 1. So that means whatever you comment in your code, that will not execute. Okay, basically the use of comment in Python syntax or in Python program is to explain the code. For example, let's say you are the developer, you are working on one live project and you have written some functions for some kind of functionalities. You put the comment above your function that what is the function and what the function is about. So whenever the new developer will check your code, जैसा कि आजकल प्रोजेक्ट में हम केटी देते हैं या कोई नया डेवलपर है, कोई मैनेजर है, कोई आपका जो कोड रीड करने आया आपके फाइल में, वंस ही विल रीड द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, तो जैसे ही वो आपके फंक्शन के ऊपर का कमेंट पड़ेगा, he or she will get the idea about the function. तो उसे पूरा कोड नहीं पढ़ना पड़ेगा. ये भी एक यूज केस है कमेंट यूज करने का अंडर दी पाइथन प्रोग्राम. सेकेंड यूज ऑफ कमेंट इज, कमेंट यूज करने से आपका कोड मोर रीडेबल हो जाता है. दोस्तों, if you want to comment the multiple line of code, you just need to use a triple string. For example, let's say now if I will run this program now, this will not execute. Why? Because we comment the whole code. We comment all the 3 lines by using triple string. Now if you are thinking what is single string, what is double string, what is triple string, so don't worry about that. Our next video is about the string itself, where we are going to learn what is string, what are the methods of string, what are the inbuilt method of string that we can use, what are the data types in Python like list, set, tuple, dictionary. We will see one by one. सारे डेटा टाइप्स को हम समझने वाले हैं डीपली, जैसा हमने आज पाइथन सिंटैक्स समझा है बाय यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल, बाय डूइंग एंड राइटिंग प्रैक्टिकल प्रोग्राम. आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इंडेंटेशन, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर द रूल्स फॉर वेरिएबल, एंड व्हाट इज कमेंट, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कमेंट व्हाइल राइटिंग अ पाइथन कोड. दोस्तों, इफ यू रियली वांट टू learn Python from basics to advanced, or you want to sharp your Python skill, then please do subscribe us, as we started the new series, new
tutorials for the beginners or for the advanced one as well, who can learn Python from basics to advanced. The next video is about what are the data types in Python, how we can use the inbuilt functions of Python in our code, the conditional statement we use today, that is if. Till then, goodbye guys, happy coding.